Hi students, hope all will be fine. Student, today I am going to start bisector of angles between lines. If two lines intersect, so if any line bisect means that divide into two equal part, that what will be equation of that line. Let L1 ax1 plus by1 plus c1 is equal to 0, L2 ax2 plus by2 plus c2 is equal to 0. There are two lines. इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो एंगल बन रहा उनका जो बाइसेक्टर लाइन होगा, इक्वेशन फॉर दैट लाइन विल बी ax1 प्लस by1 प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ax2 प्लस by2 प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट. ओके, सो कंसेप्ट ऑफ दिस लाइन, दिस फॉर्मूला, सपोज दिस इज द two line, this is the L1 and this is the L2. Okay, so this line can bisect this angle or this line will be bisect this angle. Okay, एक होगा फॉर एक्यूट के लिए, वन होगा फॉर द एब्ट्यूज के लिए. ठीक है, अब कंसेप्ट कैसे ये आया, इसके लिए we select one point, let this is the P, HK, draw a perpendicular line on this and here also perpendicular line. This is 90 degree, that is 90 degree, that 90 degree. This is suppose that O, P, this is M and this is the N. Okay, so first, how can you say this is the equidistant bisector? Equal distance पर है, ये दोनों एंगल इक्वल होगा. To this, first we have to prove the congruent. How can you prove the congruent that? अच्छा, यहाँ दिया हुआ bisector of angles, ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है कि यह लाइन एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों इक्वल है. तो यदि हम दिखा दें कि ये दोनों इक्वल है, इक्विडिस्टेंस है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पर कर सकते हैं. कैसे करेंगे? फर्स्ट हियर टू शो दैट दिस बोथ आर द इक्वल. कैसे? बोथ आर द कांग्रुएंट. कैसे कांग्रुएंट है? दिस बोथ इक्वल, दिस इज द कॉमन, दिस इज द 90 90. सो बाय एंगल एंगल एंड साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, वी कैन से दिस टू ट्राइंगल दैट व्हिच MOP and NOP both are the congruent. If both are the congruent, then we can say that MP is equal to NP. Then we have to apply the distance formula that from the point, यहाँ से हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे. HK के लिए यहाँ पर हो जाएगा AH प्लस BY प्लस C1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. दिस विल सिमिलरली हियर आल्सो विल बी फ्रॉम पॉइंट P टू दिस लाइन दैट. देन बिकॉज बोथ डिस्टेंस आर इक्वल, देन बाई इक्यू डिस्टेंस से हम इसको जो है शो कर देंगे, पुनः जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में इसको लिख देंगे. जो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर. ओके, सो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय टू लाइंस दैट. ओके, सो लेट टेक द एग्जांपल टू सॉल्व, टू यूज दिस फार्मूला दैट. हम एग्जांपल लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाए ये फार्मूला कैसे हमें यूज करना है क्वेश्चन के लिए. ठीक है, सो आई एम टेकिंग द question from the exercise from the ML Agrawal 11.11, that is last exercise of this. So let's take question. So this is the question, exercise 11.11. In this exercise we have to find the equation of the bisector. Find the equations of the bisectors of the angles between the line, that these two lines given that L1 and L2. सो एज वी हैव टू यूज द फार्मूला, हम फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला से इसको सॉल्व करेंगे. जो है एज यू नो दैट फार्मूला व्हाट वाज दैट, ax1 प्लस by1 प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ax2 प्लस by2 प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. दिस फार्मूला वी हैव टू यूज. सो हियर विल बी 3x minus 4y plus 7
upon under root a square means coefficient of x 3 square plus what is 4 square will be equal to plus minus here, okay, because 2 bisector will be that plus minus 12x minus 5y minus 8 over under root 12 square plus 5 square, because minus 5 square that became that plus. So here can write 3x minus 4y plus 7 upon 3 3 is 9, 4 4 is 16, 9 16 25, under 25 that is 5 will be equal to here 12x plus minus 12x minus 5y minus 8 over here what will be 12 12 is 144 plus 25 169, under 169 that will be 13 that, okay. So we have to solve for two equations, one for, by taking the positive and second by taking the negative. So let's find out what will be the equation. If you are taking the positive, then what will be for the positive that will be 3 cross multiply, that will be 3x minus 4y plus 7 upon 5 equal to 12x minus 5y minus 8 whole upon 13, that taken for the positive. Cross multiply, so if you multiply here what will be 13 3 is 39 x minus 52 y plus 91 equal to 60x minus 25y and minus what is 40, okay. So now simplify it to what will be. So now transpose that. If you transpose, you will find that 39x minus 52y plus 91 minus 60x plus 25y plus 40, what will be equal to 0. Now simplify this. If you simplify, you will find that from the next line that, see, minus 30, it was the 39x, so became that here. What I taken that? Yeah, I taken this is left side that. So positive became the negative. Okay, no doubt in this. So this is subtract that, what will be minus 21x. Okay, 39 minus 60, that is 21x. Now 52 and 25, if we subtract that, it will be 27y, and here minus 91 and 40, so that will be plus, okay, 100. So we have to add that, हमको इसे ऐड करना जो है, ठीक है. Make it positive, so can be write multiply by negative minus sign 21x plus 27y minus 131 is equal to what? 0 that. So this is the first equation came of the bisectors angle bisector line that. Next, if you are taking the minus, then what will be? Minus के लिए हम check कर लेते हैं यहाँ पर क्या होगा. If you are taking the minus, so for the minus, this will be here negative, ठीक है. Same things here too as you did that, only sign will be changed, here minus, here plus, and here plus will be that. So from there I am writing that if you are taking the minus, so it will be 39x minus 52y plus 91 equal to
minus 60x plus 25y plus what? 40. Okay, all the sign we can change it here due to taking the minus. Now next, now transpose this left side, so that will be equal to 39x minus 52y plus what? 91. Transpose this left side, plus 60x minus 25y minus what? 40, that is equal to 0. Then reduce it, simplify it, and what will be that? Here 39x and 60x we have to add that, so that will be 99x that. Okay, minus 52y and 25y we have to add, that will be 77 what? Y. Then this we have to subtract, because one is the positive, one is the negative. So if you subtract, what will be here? Here will be plus, and that will be 51 will be equal to 0. 99 minus 77y plus 51 is equal to 0. So if this is the second equation. If you are taking that माइनस, यदि हम माइनस लेते हैं तो माइनस के अनुसार ये सेकंड इक्वेशन हमारा जो है बनता है ऑफ बाइसेक्टर. सो दीज आर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स. टू इक्वेशंस we found that by taking the positive and negative that. Okay, and to check it acute angle and obtuse angle, that where to suppose this is the bisector, ये है आपका बाइसेक्टर हुआ. तो इसमें से जो दो इक्वेशन दिया है उसमें से इक्वेशन ले करके इससे हम चेक कर लेंगे जो है कि यदि थीटा लेस देन 45 तो क्या होगा? एक्यूट होगा. बट इफ इट इज ग्रेटर देन 45, सॉरी थीटा इज ग्रेटर देन लेस देन 45, टेन थीटा के लिए हम चेक कर देंगे तो क्या होगा? एक्यूट होगा, अदरवाइज दैट विल बी ऑब्ट्यूस होगा. ठीक है. सो लेट टेक वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द पेयर्स ऑफ लाइन both are given here, that we have to find the bisector of the acute angle. ठीक है. तो हमने बताया था कि थीटा यदि लेस देन 45 है वो बाइसेक्टर लाइन जो होगा वो एक्यूट एंगल का होगा. तो हमें क्या करना है? हमको जो है चेक करना होगा कि कौन से बाइसेक्टर के बीच दो बाइसेक्टर इसमें मिलेगा जो है. एक प्लस वाला सॉल्व करेंगे, एक माइनस वाला सॉल्व करेंगे. तो किस बाइसेक्टर से और इसके या इसके बीच एंगल जो है थीटा जो है 45 से लेस है, दैट विल बी करेक्ट आंसर दैट. सो फर्स्ट वी फाउंड दैट इक्वेशन ऑफ द लाइन विच बाइसेक्ट द एंगल, दैट विल बी इक्वल टू इक्वेशन ऑफ द लाइन विच बाइसेक्ट द एंगल विल बी इक्वल टू 3x plus 4y minus 11 upon under root 3 square 9 plus what is 16 4 square is equal to plus minus there 12x minus 5y minus 2 upon under root 12 का square 144 plus what is 25. that if we simplify we will find it that 3x plus 4y 3x plus 4y minus 11 whole upon 5 like the previous question. 12 plus minus 12x minus 5y minus 2 upon what? 13. So one times we have to take the positive, one time we have to take the negative. If we are taking the positive, let's check what will be. Same process as you done the beginning, उसी तरह से लगाना है. 13 3 जा 39, here 39x plus 52y, 13 4 जा 52 minus 13 into 11 if you multiply, so that will be 3, 13 1 जा 13 3 10, that is 143, and this 5 multiply, so that will be equal to 60x minus 25y minus what is 10. This is the
इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई विल फाइंड दिस थिंग दैट। ओके, अब क्या करना, हमको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करिए, जो है क्या मिलेगा यहाँ पर, जो है हम इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे। सो व्हाट कैन यू गेट दैट, हमें क्या मिल सकता है, चलिए 60x माइनस 25y माइनस 10 ले जा रहे हैं राइट साइड, माइनस 39x माइनस 52y एंड प्लस वाट 143 इज इक्वल टू 0 दैट। ओके, आई थिंक दैट देयर शुड बी नो डाउट दिस टाइप ऑफ द कैलकुलेशन दैट 60 से इसको माइनस करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 41x दैट। ओके, no, oh sorry, 21x, then minus and minus, this will be add, that will be what is 77, what happening that 77, then minus 10 and plus 143, this will be minus, so plus 133, that is equal to 0 that। okay, ठीक है, रिड्यूस कर लेते हैं 7 से, इफ इट रिड्यूस बाय 7 सो दैट इज 3x माइनस 11y प्लस व्हाट विल बी हियर 7 1 जा 7, ओके, एंड 6 दैट इज इक्वल टू 0। सो वी फाउंड दैट फर्स्ट इक्वेशन, पहला इक्वेशन हमको जो है ये आपको मिल गया। ठीक है, दूसरा भी निकालना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है इससे हमको न मिले तो दूसरा हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दूसरा भी निकाल लेते हैं, मीन दैट बाय टेकिंग द माइनस। ये तो प्लस लेते हुए मैंने 21 निकाला, सेकंड विल बी बाय टेकिंग द माइनस। सो इफ यू आर टेकिंग माइनस व्हाट विल बी चेंज, क्या आपका चेंज होगा। इफ यू आर टेकिंग हियर माइनस तो ये आपका माइनस हो जाएगा, दिस विल बी माइनस हियर। ओके, यहाँ पर आपका माइनस होगा, हियर विल बी प्लस, हियर विल बी प्लस। ठीक है, नाउ देन ट्रांसफर दिस लेफ्ट साइड 39x प्लस 52y माइनस 143 प्लस 60x माइनस 25y एंड माइनस व्हाट इज 10 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, ये हमको जो है पहला पार्ट मिला। सब ऐड, दिस विल बी ऐड, सो कैन बी राइट हियर दैट आफ्टर एडिंग दैट, इसको ऐड करेंगे 39 एंड 60 तो व्हाट विल बी 99 क्या x आएगा। ठीक है, 52 से 25 हम माइनस करेंगे तो दैट विल बी क्या 27y होगा। ठीक है, माइनस 143 एंड माइनस 10 ऐड होगा दैट विल बी 153, दैट विल बी इक्वल टू 0। वी फाउंड दैट सेकंड इक्वेशन दैट इज बी पार्ट, दैट ये बी पार्ट का इक्वेशन हमको मिला। दो बाइसेक्टर मिला, अब देखना कौन सा बाइसेक्टर ऐसा है या इससे एक्यूट एंगल बना रहा, मीन दैट थीटा इज लेस देन 45, दैट वही हमको चेक करना है जो है। ओके, दैट इज द मेन थिंग, सो वी कैन फाइंड आउट द आंसर। सो स्टूडेंट, दिस वी फाउंड दैट टू इक्वेशंस ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल दैट। ओके, लेट रिड्यूस दिस, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं by 9 if we divide it, so what should be here, if we divide by 9 so 11x, here will be 11x plus 27y minus 9 1 ja 9 and 6 3 9 7 ja, that is equal to 0। so this is the after reduce this equation came that। okay, so equation A and equation B, so we have to find that which equation is correct, which will make the acute angle, that कौन सा equation correct होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जो है, ठीक है, हमें चेक करना है इसके बीच थीटा क्या लेस देन 45 है
क्या है इसके बीच, थीटा लेस देन 45 है। इन दोनों में से यदि कोई आ जा रहा है तो उसी इक्वेशन को हम फाइनल कर लेंगे। तो पहले हम इसे ए और इस इक्वेशन से लेकर चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन व्हाट विल बी m1 -3/4 एंड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन व्हाट विल बी m2 इज इक्वल टू 3/11। ठीक है, इसमें डाउट नहीं है। स्लोप निकालने के लिए दैट विल बी 3/11। नाउ वी हैव टू फाइंड दैट tan थीटा, एज यू नो tan थीटा इज इक्वल टू mod of m1 minus m2 whole upon 1 plus m1 m2 of the total modded. Okay, let this write here 11x plus 27y minus 17 is equal to what? 0. Now put these values. We can find -3/4 minus m2 3/11 over 1 minus 3/4 into 3/11 that. Simplify, that will be equal to -33 minus 12/11 4 जा 44 here upon 44 minus 9 here what is the 44. This will be cancelled. So can write here 45 minus 45 if we subtract this, so we can find here that 35, correct na? 11 4 ja 44 minus 9. Okay, so what is the result coming? That is coming the 45/35. This is not less than 1, this is the greater than 1 coming that. So this is not applicable, this is not valid, mean that this will be not correct result that, क्योंकि यहाँ थीटा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है। अब हम चेक करेंगे इन दोनों इक्वेशन से टू फाइंड so m1 according that m1 is equal to 12/5 and here यहाँ से देखते हैं -11/27 ये m1 m2 हो गया। tan थीटा is equal to mod of m1 minus m2, so 12/5 minus plus 11/27 upon 1 because it is the 1 plus m1 m2, so here will be minus due to this minus that, so 12/5 into 11/27 that. Okay, इसको हम हटा देते हैं, यूजलेस, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। नाउ ठीक है, ये आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 into 27 that will be LCM, so can be write 12 into 27 plus 55 whole upon 5 into 27 LCM upon here 5 into 27 minus 12 into 11/5 into what, 27. This will be cancelled. Okay, अब ये मल्टीप्लाई करके हमको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेना, चेक कर लेना कि व्हाट इज कमिंग दैट. ओके, नाउ so let me multiply that. Yes student, now I am going to check that from the B part that I found that here was written that 27, यहाँ पर 27 लिखा हुआ था, 3 होना चाहिए क्योंकि 9 से जब डिवाइड किए थे तो यहाँ 27 था, तो 9 3 जा 27 होना चाहिए, तो यहाँ 3 हमने लिख करके 27 लिखे हुए थे। और 27 ले करके m1 m2 निकालने के बाद आफ्टर द फाइंडिंग m1 m2 फ्रॉम बोथ इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन से मैं सॉल्व कर रहा था। सॉल्व करने के बाद मैंने वीडियो काटा भी, जो है हमको हम ऑब्जर्व किया कि फॉल्ट कहीं हो रहा है, और जब मैं चेक किया तो मैंने पाया कि आफ्टर डिवीजन ऑफ 9 डिवाइड करने के बाद दिस शुड बी 3
ठीक है, ना कि 27 होना चाहिए जो है। तो लेट चेक बिटवीन दिस टू लाइन, m1 इज इक्वल टू 12/5 होगा एंड हियर m2 इज इक्वल टू -11/3 होगा। ठीक है, m1 m2 निकालना आपको आसानी से आता है। नाउ फाइंड दैट tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू mod ऑफ m1 minus m2, इट मीन दैट 12/5 minus minus plus 11/3 whole upon 1, because 1 plus m1 m2, so 1 plus m1 into m2, because here the minus, so it will be minus 12/5 into 11/3 that. Okay, now simplify that. If you simplify, it will be 36 plus 55 upon 5 3 जा 15 यहाँ होगा और नीचे 15 होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो दैट विल बी 15 minus 12 into 11. If you multiply, then check that what will come. 12 1 जा 12 and 122. This is mod of this 36 plus 55, 15 minus 122 that. Okay, so I think that this is looking there already. This will be greater, denominator will be. So now simplify that. So if we add, then one thing here, looking the little fault, that should be 132. 12 1 12, 2 carry 10 carry 1, 12 12 130. 132 that. So now add this, what will be? Tan theta is equal to mod of what will be 91 upon, you have to subtract that 117, 12 minus 5, this 117 that. It means that 91 upon 170, which is less than 1. It means that here theta less than what? 45. So correct answer will be for the acute angle 11x plus 3y minus 17 is equal to 0 that. So this was questions related to that formula. So student, a few more questions having from the exercise you have to take and you do that. Okay, thanks for watching my video.